Question number 2. The mean free path of an ideal gas at a constant pressure with molecular diameter d in terms of absolute temperature is how much? Wavelength का formula अपने को मालूम है. Lambda is equals to mean free path is equals to 1 by under root of 2 pi n into d square. N is nothing but what beta? Total number of molecules per unit volume. अगर Boltzmann's constant में लिख रहे हैं तो lambda is equals to kT divided by under root of 2 root 2 pi d square by d. यानी mean free path is directly proportional to your absolute temperature, inversely proportional to square of diameter, inversely proportional to your pressure. Done. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वन देखिए बड़े जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 3. The maximum wavelength of radiation that can be produced photoelectric effect in a certain metal is 2000 angstroms. The maximum kinetic energy acquired by the electron due to radiation of the wavelength 1000 angstroms will be equal to how much? लगाइए कोई. Question number 3 try करिए जल्दी से. The maximum wavelength of radiation that can produce the photoelectric effect in a certain metal is 2000 angstroms. The maximum kinetic energy acquired by the electron due to the radiation of the wavelength 1000 angstroms will be equal to how much? Einstein's photoelectric equation बेटा. Einstein's photoelectric equation क्या है बताइए जल्दी से. ट्राई करिए. सेकंड ऑप्शन निदा. सिक्स पॉइंट टू आ रहा बेटा. ठीक. फॉर्मूला क्या था बेटा? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, isn't it? अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं मैं in terms of wavelength, I can write this one as hc divided by lambda is equals to hc by your lambda naught plus maximum kinetic energy. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकाल लीजिए. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hc कॉमन आ जाएगा. इट इज 1 by lambda minus 1 by lambda naught. Unit will be equal to your joule, isn't it? So now in terms of your electron volt अगर मुझे लिखना है तो divided by your hc divided by your E on joule is equals to, isn't it? So this will be equal to your 1 by lambda minus 1 by lambda naught into energy will be equal to your electron volt. आ गया? Exactly. चलो बस इसका कैलकुलेशन करना है. So this will be equal to your hc by your E की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 12400 into 1 by इसका वेवलेंथ कितना है 1000 minus 1 by your 2000. Unit is electron volt. So this will be equal to 12400 into इसका LCM कितना बन जाएगा बेटा? 1 by 2000. 2000 minus 1000 that will be equal to your 3. So it is your 1 by 2000. ये 20 चले गए. So it is 124 divided by 20. 2 6 2 2 यानी 6.2 electron volt. Very good. Done. चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बताइए बेटा. Which of the following graphs best represents the variation of resistivity with the temperature for the manganese? NCERT का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है. रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रो इज इक्वल्स टू योर रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा, isn't it? And the resistivity will be varying with the temperature beta. So what will be the graph for that one? ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? इसको लिख सकता हूं मैं ऐसा, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट प्लस दिस वन इज रो नॉट अल्फा इनटू डेल्टा टी. तो रो वर्सेस टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पर टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट प्लस ऑफ योर m इनटू x. एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले लिया. इसका स्लोप कितना बन जाएगा बेटा? रो नॉट x, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू रो नॉट इनटू x. इसका जो थीटा बन रहा है यहाँ पर, दिस विल बी द थीटा. सो थीटा विल बी इक्वल टू योर tan इनवर्स ऑफ रो नॉट इनटू x. अगर स्लोप पूछा तो ये हो गया कांस्टेंट. यहाँ पर कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रो नॉट. सेकंड ग्राफ विल बी द आंसर फॉर दैट. वेरी गुड. So next question number 6. A wire of length L with Young's modulus Y is hanging from a fixed support. The length of the wire becomes L1 when mass is M1 is suspended, and it is becoming L2 when mass M2 is suspended at its free end. Then original length L is equals to your how much?
Young's modulus का formula बेटा, Young's modulus is equals to, what is the formula बेटा Young's modulus? Young's modulus is equals to stress divided by strain. A wire of length capital L with Young's modulus y has been hanging from a fixed supports. मतलब यहाँ पर अगर मैं इसका diagram draw कर लूँ तो मेरे पास एक wire है fixed support. The length of the wire is L1 when there is a mass of your M1 is suspended for this one, isn't it? And it becomes L2, and it becomes L2 when mass is right now for me your M2. The original length यानी mass लगाने से पहले जो इसका length था capital L, what will be L value for that one? This is L1 and this one is L2, isn't it? So next modulus can I write in terms of your mass and in terms of length better? Material तो same है ना? There is no change in the metal, एक ही metal ले रहा है. तो y is equals to stress will be equal to force by area. Force मतलब tension in the wire, that is a T1. Initial length is nothing but L divided by area A into change in length L1. Second के लिए भी वही होगा, y is equals to your T2 into original length L divided by area into extension, and this one is right now for me L2. As material is same, so y must be equal to same for both of them. So if I'm taking this one as y1, this one as y2, y1 will be equal to y2. So T ये और ये cancel हो जाएगा. So what I'll be getting right now for this relation? T1 divided by L by A और N by A दोनों cancel हो जाएंगे. So first one में क्या बन जाएगा मेरे पास? T1 divided by delta L. Delta L मतलब क्या बेटा? L1 minus L. इसके लिए extension कितना हो जाएगा? This is an extension. So L1 minus L. So that is equals to tension T2 divided by, next one is nothing but L2 minus of your L. Done. चलो टेंशन T1 कितना हो जाएगा बेटा इसके अंदर हो गया टेंशन T1, तो इसका वेट हो गया M1 इंटू जी, और इसका हो गया टेंशन T2 और इसका वेट हो गया M2 इंटू योर जी. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ M1 इंटू जी डिवाइडेड बाई L1 माइनस L इज इक्वल्स टू योर M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई L2 माइनस ऑफ योर L. तो जी और जी भी कैंसिल हो जाएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो इट इज M1 इंटू L2 माइनस L इज इक्वल्स टू योर M2 इंटू L1 minus L. तो सिंप्लीफाई कर लेते विल गेट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू योर M2 into your L1 minus L2 into your M1 divided by your M2 minus M1. So this will be the value of your L. So what is the option I can write for that one beta? Which option is matching? M2 into L1, M2 into L1 minus L, minus के साथ L2 into M1 minus of L2 into M1 divided by M2 minus of your M1. Third option. Chali, very good. Question number 7. Two tuning forks A and B produces the notes of frequency 336 Hz and 340 Hz. An unknown note of the guitar strikes when sounded with a fork of A produces certain beat. When same note is sounded with the fork B, the beat frequency gets doubled. The unknown note of the guitar string is equals to your how much for me? Look, but the frequency of your A is given for me as of your 336 Hz, and frequency of your P is given as of your 340 Hz, isn't it? So मान के चलो unknown frequency is not for me N. N is right now for me unknown, isn't it? And this unknown frequency is producing the beats with your A and as well as of this one. So unknown will be equal to how much for me? Delta N will be equal to your, this will be 336. ये कम हो रहा है ना तो -4. So 336 minus 4, that will be equal to 332 Hz. That's it. That देखो यहाँ पर beats directly आ जाएगा ना. देखो if it is producing number delta in beats अगर दे रहा है तो beats B is equals to NA minus A लिख सकता हूँ first one, isn't it? और the beats second one में क्या हो गया? Double हो गया. That is nothing but 2B is equals to your NB minus of your N. Isn't this is equation number 2. दोनों को separate कर दीजिए. अगर दोनों को separate कर रहा हूँ तो what I'll be getting right now? NB minus of your NA will be equal to your beat frequency. NB की वैल्यू कितनी है? 340 minus of your 336. That is equals to beat. The number of beats कितने आ गए मेरे यहाँ पर? Number of beats is equals to 340 minus 336. That will be equal to 4. Isn't it? So N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? So number of beats will be equal to your N है basically मेरे पास. So beats frequency will be equal to how much for me? N की वैल्यू निकालना ना. Delta N की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 4 आ गई. So this will be equal to how much for me? N is equals to NA minus of your beat frequency, isn't it? So that will be equal to your how much for me? 336. A beat frequency हो जाएगा N. 336 minus 4, that will be equal to 332. Done. Sure.
मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले. नेक्स्ट वन इज 9th वन 10th वन देख लीजिए. चलो सब्जेक्ट ने 10th वन ट्राई करिए. What is the de Broglie wavelength associated with electron accelerated through a potential difference of 64 volt? बोलना सभी लोग. What is the de Broglie wavelength associated with it? What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 64 volt? Direct formula याद है? Everything is given in nanometers. De Broglie wavelength in terms of potential. Lambda is equals to 1.227 divided by root of your V. Units will be nanometers. अगर एंगस्ट्रॉम्स में होता है तो 12 पॉइंट कुछ लिख लेते बेसिकली. थर्ड ऑप्शन आ रहा था. So that will be equal to 1.227 divided by root of your 64. Root 64 मतलब 1.227 divided by root 64 is how much बेटा? 8 8 is 64. So it is 1.227 divided by your 8. Isn't it? That will be equal to how much will be 0.153 nanometers. Third option. चलो 11th one तो मैंने कर दिया. देखिए, for which of the following inputs the output is high, isn't it? अब given data से आप लोग कुछ लेके करना पड़ेगा बेटा. For which of the following inputs output is high? अगर A 1 है, B 0 है, एक कौन सा गेट है बेटा? R गेट. So y dash is equal to A plus B. और C की वैल्यू में 1 ले रहा हूँ फ्रॉम द ऑप्शंस. तो इसका आउटपुट R का आउटपुट हो गया A प्लस B और C का इनपुट हो गया C. इन दोनों को मैं इसको दे रहा हूँ राइट नाउ फॉर मी एंड गेट. सो y इज इक्वल्स टू y डैश डॉट C. y डैश मतलब क्या है? A प्लस B डॉट C. अब इसमें आप वैल्यूज डाल के देख लीजिए क्या आ रहा है. इसमें A की वैल्यू पहले 0 लिया, फिर B की वैल्यू 1 लिया और C की वैल्यू 0 लिया. इनपुट कितना आ रहा? 0 आ रहा. A की वैल्यू 1 ले लीजिए, B की वैल्यू 1 ले लीजिए, C की वैल्यू 0 ले लीजिए. बस ऑल दी ऑप्शंस को आप क्रॉस चेक कर लीजिए. दैट विल गिव मी द आंसर. एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए. सेकंड वन. क्वेश्चन नंबर 14 बताइए बेटा. When a diode is heavily doped, depletion region will be wide, depletion region will be very thin, diode material will be positively charged, avalanche voltage will be very high. Anyone? When diode is heavily doped, depletion layer will be very wide, depletion region will be very thin, and the diode material will be positively charged, avalanche voltage will be very high. Madhya, फिर दो second one. और कोई? चार्ट बॉक्स में आंसर्स देना बेटा जल्दी जल्दी. डायोड इज हेवीली डोप्ड, यानी इंप्योरिटी बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी. कंडक्टिविटी बढ़ रही तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. सो डिप्लेशन रीजन विल बी वेरी थिन. डन. चलिए 15th one. A capillary tube has a radius of the capillary tube is given as 0.05 centimeter. The tube is dipped in a container filled with water. Surface tension of the water दे रखा है, T is equals to 0.075 Newton per meter. What is the height of the water raised in the capillary tube due to the capillary action? Surface tension का फॉर्मूला बताइए. H is equals to 2T into cos theta divided by RD into G. T is the density, G is acceleration due to gravity, R is the radius, T is the surface tension, H is your height part of relation. तो पूरी values डाल दीजिए. Isn't it? Pure water के लिए तो angle of contact कितना हो जाएगा? 0. Theta is equal to 0, तो cos 0 will be equal to 1. Radius is given for me 0.05 centimeters. ये न्यूटन पर मीटर में, इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. So it will be 5 into 10 to the power of minus 4 meters. So height will be equal to how much for me? 2 into 0.075 divided by radius. Radius is how much for me? 5 into 10 to the power of minus 4 into density of water is equals to 10 to the power of your 3 into acceleration due to gravity is nothing but equal to your 10. So simplify कर लीजिए. That will give me the answer for this. कितना आ रहा? 3 centimeters. Very good. 3 centimeters मतलब कौन सा ऑप्शन है बेसिकली? चलो
Question number 16, beta. Very good question. The energy equivalence of 2 grams of a substance. Last year, before last year, भी ऐसे ही question पूछा था. Exactly ऐसे ही. The energy equivalence of 2 grams of a substance will be equal to how much? Einstein's mass energy equation लगा लीजिए. E is equals to m into c square. E कितना मास कितना है बेटा 2 ग्राम्स यानी 2 into 10 to the power of -3 ग्राम्स को आपको कन्वर्ट करना है क्योंकि यूनिट इज इन जूल्स into velocity of light 3 into 10 to the power of 8 का होल स्क्वायर. बस इतनी बात है. देखो कितना आ रहा है 3 is 9 9 2 is 18 यानी पूरा 1.8 में 6 कैलकुलेशन का केयर करना बस ज्यादा कुछ भी नहीं. कितना आ रहा फोर्थ ऑप्शन 1.8 into 10 to the power of 14 आया सभी को इतना ही 1.8 into 10 to the power of 14 joules. Very good. Fourth option. Done. Sure. Next one. The solid which has a negative temperature coefficient of resistance is again very good question. Beta NCERT का है. बच्चे बहुत सारा theory है बोलकर छोड़ देते हैं. वैसे good question. Try to remember at least. The solid which has the negative temperature coefficient of resistance will be equal to mercury, nichrome, manganese, graphite. Graphite is a form of carbon beta, which has a negative temperature coefficient. Nichrome, mercury, and manganese are right now having the positive. So only thing is graphite. Graphite क्या होता है? Carbon का form होता है कि नहीं? So for that one, the temperature coefficient will be negative. चलो. Question number 18. A ray is incident at an angle of incidence I on one of the face of the prism with angle of prism दे रखा है 6 degrees and emerges from the second face. If the prism is dipped in a transparent liquid of refractive index 1.2 and angle of deviation is 2 degree, then what is the refractive index of the prism? चलो इसको डायरेक्टली डेविएशन को फॉर्मूला लगा के करना है बेटा. I'm leaving it fit for you. You try to do it out. Deviation is equals to mu minus 1 into A. When it is immersed in water, we need to write the refractive index of the second medium with respect to first medium. Okay, just take care of that one. We can do it out. Done. Sure. Question number 19 बताइए बेटा. Question number 19. Very good question. In Bohr's model of hydrogen atom for dynamic stable orbit, relation between the orbit radius and the speed of the electron. In Bohr's model of hydrogen atom for dynamic stable orbit, relation between orbit radius and the speed of the electron will be equal to how much? So dynamic stable orbit मतलब क्या है बेटा? When electron is revolving in a circular path, electrostatic force is responsible for the centripetal force, isn't it? So यानी force will be equal to your electrostatic force will be equal to your mv square divided by r. Electrostatic force will be equal to mv square divided by r. Electrostatic force मतलब 1 by 4 pi epsilon naught into charge of electron q1 into q1 q2 that is e into e, that is e square divided by r square, that is equals to m into v square divided by r. ये r square चले गया तो रेडियस आ गया मेरे पास r is equals to e square divided by 4 pi epsilon naught into m into your v square, isn't it? So what is an option right now for this one? Fourth one. Very good. Question number 20. Question number 20, 21, 22. Take a 2 minutes of a time or 3 minutes of a time and you can do it out better. Question number 20 is the directly formula based question. Assuming that light of wavelength 6000 angstrom is coming from the star, what is the limit of resolution of the telescope whose objective has a diameter of your 122 centimeter? Limit of resolution for the telescope क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बताइए जल्दी से. Delta theta is equals to 1.22 into lambda divided by your d, isn't it? So that is equals to 1.22 into wavelength is 6000 angstroms divided by d. D is nothing but how much will be diameter, that is nothing but equal to your 1.22 centimeters से, तो इसको convert कर लीजिए, it is 1.22. ये भी एंगस्ट्रॉम्स में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए 10 to the power of -10. So that will give me the answer. So just take care of the calculation there. Question number 21 देखिए बेटा, good question, आप लोग किसी हाल में भी करना ही है. A body weighs 120 Newton at a height equal to the radius of the earth. Its weight on the earth's surface will be equal to how much?
Question number 21. A body weighs 120 Newton at a height equal to the radius of the earth. Very large distance है बेटा. You can't use the direct shortcut formula. आपको general formula लगाना पड़ेगा. G at a certain height is equals to G into your R square divided by R plus H whole square. I hope you remember this formula. अगर height very small lesser than R होता तो G at your height will be equal to how much बेटा? G into 1 minus 2H divided by R. ये लेते. लेकिन यहाँ पर height is equal to the radius of the earth and a very larger height. तो इसके लिए हम लोग G at a certain height का फॉर्मूला लगा रहे हैं. G into R square divided by R plus of your H whole square. Isn't it? अब इसका weight लिख लीजिए बेटा. Weight मतलब m into G at a certain height divided by m into G on the surface of the earth. That will be equal to your R divided by R plus H का whole square. बाकी वो पूरे cancel हो जाएंगे. So this will be equal to weight. Weight at a certain height divided by weight on the surface will be equal to R divided by R plus H is equals to how much per meter? H is equals to your R. तो ये भी हो गया R का whole square. And this one is R by, there is nothing but 2R whole square. It is R gets cancelled 1 by 4. So weight on this surface will be equal to your how much per meter? 4 times the weight at a certain height. So that is if your 4 weight at a certain height कितना है? 120. So 4 into 120 is nothing but 480 newtons. Fourth option. Very good. Next one. An electron has a drift velocity of 4 into 10 to the power of minus 4 meter per second. If the mobility of the electron is 3 into 10 to the power of minus 2 meters square, volt inverse, second inverse, then the applied electric field is equals to how much? Let me see how many of you will give me the answer for this. चलो try करिए this. Drift velocity का formula याद है किसी को? Mobility is equals to drift velocity divided by electric field. Isn't it? And electric field will be equal to drift velocity divided by mobility. Drift velocity कितनी है? 4 into 10 to the power of minus 4 divided by mobility is 3 into 10 to the power of minus 2. So इसको simplify कर लीजिए. That will give me the answer. कितना आ रहा है देखिए? 1.3 आ रहा. Okay. So it is 1.3 into 10 to the power of minus 2 volt per meter. Which option? Third option. Very good. Question number 23. For transistor action, which of the following statement is correct? The collector side is heavily doped and has a small cross-sectional area. Transistor works as an amplifier when both the emitter base and collector base junction is reverse bias. C. In NPN transistor, current enters from the emitter into the base. Base current is approximately equal to collector current in the NPN transistor. Correct बोल रहा है. Collector side is heavily doped. Who is heavily doped beta? Emitter is heavily doped ना. So first option तो नहीं होगा. Transistor works as an amplifier when both the emitter base and collector base junction are reverse biased. No, emitter and base must be forward biased. So ये भी नहीं होगा. In NPN transistor, current enters from your base region, enters from your emitter to base region. Yeah, this is correct. Base current is approximately equal to the collector current in the emitter. ये भी नहीं होगा. Done. So only the correct option is NPN transistor में current is entering from your emitter to the base junction. ऐसी होगा ना बेटा. This is your emitter, this is your base, this is your collector. तो यहाँ से collector हो जाएगा. This should always be your forward bias. This should always be your reverse bias. Done. Third one. Very good. Then 24 will come back. 26 करिए, 25 करिए. Taking into account the rules of significant figures, what is the value of 436.32 grams plus 0.301 gram plus 227.2 gram? चलिए जल्दी बताइए. Anyone? Taking into account the rules of significant figures. कितना है? 633 point. Second option. Very good. Second option ही होगा.
क्योंकि बेटा अब जब भी ऐड कर रहे हो ना, लीस्ट क्या बोल सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने भी रहेगा, यानी प्रिसिशन किसमें भी होगा, दैट विल बी द आंसर। इसमें देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस की फिगर कितने हैं, 2। इसमें कितने डेसिमल की बात है, ये तो डेसिमल है ना बेटा, लेसर देन 1 वैल्यू। और इसमें कितने हैं देखो 4 5, तो योर आंसर शुड आल्सो बी इन योर दिस पार्ट। द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दिस वन इज हाउ मच फॉर मी, योर डेसिमल के बाद 1, इसको डेसिमल के बाद कितने 3, डेसिमल के बाद इसको 2, इसके लिए कितना है 1। सो आंसर मस्ट बी, जब ऐड कर रहे हो तो डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आपके आंसर होना चाहिए। तो दिस इज 4, योर आंसर शुड आल्सो बी इन द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। डन। चलो question number 26, I hope everyone can do this one. Two bodies of masses 15 kg and 10 kg are tied to the ends of a massless string. The extensible string passes over a frictionless pulley as shown in the figure. The acceleration of the 15 kg mass will be equal to how much? Just make that free body diagram for this one beta. ये हो जाएगा 15 g in the downward direction, ये हो जाएगा 10 g in the downward direction, और इसके अंदर टेंशन जाएगा कैपिटल टी, और इसके अंदर भी टेंशन जाएगा कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी हो जाएगा और इसमें भी कैपिटल टी हो जाएगा। सो इक्वेशन अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 15g minus t is equals to 15 into your e. This is going up, so it is t minus of 10g will be equal to 10 into your e. या एक्सेलरेशन अगर पूछ रहा है तो सीधा सीधा मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a is equals to m2 minus m1 into g divided by your m1 plus m2, अगर आप लोगों के पास फॉर्मूला याद हो तो। So it is your 15 minus 10 into g divided by 15 plus of your 10. 15 minus 10 is nothing but 5. 5g divided by your 15 plus 20, 10, that will be equal to 25. Now 5 ones are 5 5s are, yani g by 5 will be the answer. Done. Very good. Done beta. Very good. 27. A cylinder contains oxygen gas, but oxygen gas at a pressure of 260 kilopascal and temperature is 27 degrees Celsius. The density of the gas is R is given for me. Density का formula मालूम है अपने को, rho is equals to PM divided by RT. Pressure is given how much for me beta, 260 kilopascal, यानी 260 into 10 power 3. Molecular weight of the gas, oxygen gas will be 32 grams से बेटा, grams को convert करना पड़ेगा, 32 into 10 power minus 3. डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू दे रखा है 8.3 और टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 प्लस 273 300। इसको सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा बेटा भी। An electromagnetic wave contains non-zero energy density associated with it. It has both electric and magnetic field associated with it. Then the free space with RMS value of the electric field is E. The average energy density associated with the electric field will be equal to how much? Average energy density of electric field का फॉर्मूला याद है बेटा, U is equals to your half into epsilon naught into E square. Magnetic field के याद है, energy of the magnetic energy density for the magnetic field will be equal to half into B square divided by over mu naught. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा। Then so in free space RMS value of the electric field as E, the energy density of the electric field is half epsilon naught into E square. ये करेक्ट ही है। In free space, the RMS value of the magnetic field as B, the average energy density associated with the magnetic field is B square by 2 mu naught. This is also same. Contribution of electric field to the average electric field is double that of the magnetic field. No, both of them are same. ये wrong है. So both 1 and 2 will be correct. Done. Fourth one, very good. Next one. Question number 29. कोई कर सकता है क्वेश्चन नंबर 29, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। A closely wound solenoid, solenoid मतलब ऐसा कोई भी एक कंडक्टर पे अगर हम लोग ऐसा डाल रहे हैं बेसिकली, तो इसके ऊपर एक वायर जो वाउंड अप होता है ना, इसको हम लोग सोलोनॉइड बोलते हैं। तो क्लोजली wounded solenoid is 60 centimeter long and has a 5 layers of 300 tons each. The diameter of the solenoid is 1.2 centimeter. The current carried is 5 ampere. The magnitude of the magnetic field inside the solenoid. For the solenoid magnetic field का फॉर्मूला क्या है बेटा? P is equals to mu naught into N into I. N is nothing but what beta? Number of turns per your unit length, isn't it? So number of turns per your unit length will be equal to कितने turns है बेटा? 5 into कितने number of 300, isn't it? Divided by length will be equal to how much बेटा? कितना length है basically इसका? 60 centimeters, यानी 0.6 meters, isn't it? तो इसकी वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा, 5 into 500, 5 into 300 divided by 0.6,
By there is a 15 divided by your 6. कितना आ रहा 2500 टर्न्स पर मीटर. ये सेंटीमीटर में है तो थोड़ा बहुत आपको लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा. दैट्स इट. तो n की वैल्यू आ गई. सो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है याद है किसी को? 4 pi into 10 to the power of -7. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. 2500 into करंट. करंट कितना दे रखा है प्रॉब्लम में देखो 5 एम्पियर्स ऑफ योर करंट into 5. बस छोटा सा कैलकुलेशन है, आप आराम से करके निकाल सकते हो. पेपर ऐसे ही रहेगा बेटा. एग्जैक्टली इतने फॉर्मूले बेस पे ही होंगे बेसिकली. ज्यादा टाइम नहीं रहेगा आप लोगों को करने के लिए लंबे लंबे कैलकुलेशंस. क्वेश्चन नंबर 30. इन Young's double slit experiment, if the separation between the slit plane and the screen is doubled and wavelength of the coherent light is used, two slits has been halved, then the fringe width will be equal to how much? Fringe width का फॉर्मूला याद है? बीटा is equals to lambda into capital D divided by small d. उसने क्या बोला? capital D is right now for me doubled, wavelength is right now for me half, lambda by 2. The new fringe width will be equal to how much? So beta dash will be equal to how much for me बेटा? ये हो जाएगा lambda 2 into this one is right now 2d divided by your d. A2 चले जाएगा तो this will be equal to your beta dash is equals to your beta. Fringe width will remain for me same, so it remains unchanged. आ गया? चलो. In a meter bridge, the null point is found to be at a distance of 33.33 centimeter from the left end. The resistance connected to the right gap is 12 ohm. The unknown resistance in the gap will be equal to how much? आप लोग का मीटर ब्रिज ऐसा होता है, याद है आप लोग को? सो यहाँ पर एक रहता है बेसिकली. तो यहाँ पर एक कंडीशन आईपी में भी आप लोग ने पढ़ा था. यहाँ पर भी एक कंडीशन होगा और ये एल शेप कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ रहता है ऐसा. एंड दिस इज ऑल्सो एन एल शेप. और इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्टेड होता है बेसिकली. एंड यहाँ पर एक रेसिस्टेंस होता है एंड यहाँ पर एक रेसिस्टेंस होता है एंड दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर होता है. एंड दिस इज द जॉकी, isn't it? So balancing length right now, यहाँ पर है value of R, यहाँ पर है S is equals to 12 ohms. In meter bridge, the null point is found to be the distance of, यानी L is equals to 33.33 centimeters. अगर ये L है, if this value is your L, this value will be your 100 minus L. The resistance connected in the right gap is given as 12 ohms, and the unknown resistance is connected in the left gap. That is nothing but equal to your R, isn't it? तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को व्हिटस्टोन ब्रिज का? R डिवाइडेड बाय अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L. R निकालना है अपने को. R इज इक्वल्स टू S इनटू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L. L की वैल्यू दे रखा है 33.3, तो S की वैल्यू भी दे रखा है 12. तो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर राइट, यहाँ पर कर रहा हूँ. देखो R इज इक्वल्स टू S की वैल्यू कितनी है 12 इनटू दिस वन इज 33.33 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 33.33. So that will be equal to 12 into 33.33 divided by 100 minus of your 33 raised 66 point of your 66. कितने में जा रहा है देखिए? ये तो डबल हो गया ना. 12 into 33, so it will become for me 1/2 into 12, isn't it? ये 12 as it is हो गया क्योंकि 31 1 जा में 31 2 जा में जाएगा. So 12/2 2 1 जा 2 6 जा. So R is equals to 6. Very good. Next one. 32. Good question. Daily food intake of a human adult is equivalent to 10 power 7 joules. Its value in electron volt will be equal to how much? Daily food intake of a human adult is equivalent to 10 power 7 joules. इस पेपर को 2-3 बार करिए बेटा. Good question है. फॉर्मूला बहुत सारे रिवाइज हो जा रहे हैं. Daily food intake of a human adult is equivalent to 10 power 7 joule. Its value in the electron volt will be equal to how much? I'll send this paper to the madam. आप मैडम से पूछ के ले लीजिए जरा पेपर. कितना आ रहा है बेटा? Daily food intake of a human adult is equivalent to 10 to the power of 7. Relation between your joule and electron volt बेटा. 1 joule is equals to कितना होता है याद है? 1 joule is equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 electron volt. So energy equivalent to how much for me? 10 to the power of 7. That will be equal to 10 to the power of 7 joules है energy की value. That is equals to 10 to the power of 7. 1 joule will be equal to in electron volt है ना बेटा? Energy will be in terms of an electron volt. Daily food intake of an human adult is equal to 10 to the power of 7 joules. So energy is equals to 10 to the power of 7 joules. 1 electron volt is equals to 1.6 into, sorry, 1 electron volt will be equal to
1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. Sorry. So 1 joule will be equal to how much better? 1 electron volt divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. So it is 10 to the power of 7 joules here, energy equivalent in the electron volts. So that will be equal to 1 electron volt divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19. देख लीजिए कितना आ रहा है. Second option आ रहा है सभी को. 6.25 into 10 to the power of 25. Very good. 6.25 into 10 to the power of 25 electron volt. Second option. Next one. When 92 uranium isotope is bombarded with a neutron, it generates your 51 133 sp. 4 neutrons are also been coming. उसके साथ और क्या आ जाएगा बताइए बेटा. $92 uranium isotope is bombarded with a neutron. It generates 51st element, antimony, and along with that one, 4 neutrons are been also emitting. What is the answer for that one? Equation लिख लीजिए. 92 uranium 235. It is bombarded with your neutron. And neutron is a neutral particle, so it is 0 and 1. That is giving you antimony element atomic number 51, and this one is 133. प्लस 4 न्यूट्रॉन्स भी आ रहे हैं उसके साथ, और बैलेंस करिए कितना निकल रहा है. विल गेट सम एलिमेंट x 235. ये हो गया मेरे पास 133, isn't it? So this will be getting some element A, and यहाँ पर हो गया Z. अब कंजर्वेशन लगाइए बेटा. LHS और RHS का कंजर्वेशन लगाइए. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन. यानी ये हो गया 92 प्लस 0 मस्ट बी इक्वल टू 51 प्लस ऑफ यूर Z प्लस इसके साथ कितना है यहाँ पर 0. तो Z की वैल्यू कितनी बन रही देख लीजिए. Z की वैल्यू आ जाएगी 41. 41st एलिमेंट आना चाहिए. दिस वन 40, थर्ड ऑप्शन. वेरी गुड, दैट्स इट. तो बाकी करने की भी जरूरत नहीं, मास भी कंजर्व करके कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए क्वेश्चन नंबर 34. Two cylinders A and B of equal volumes are connected to each other via stop clock. Cylinder A contains an ideal gas at a temperature T and pressure P. Cylinder B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. Now stop clock is suddenly opened. What happened to this given condition? ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार ट्राई करिए आप लोग. सही थियरी है, एक बार आप लोग पढ़ के निकालिए. आई एम नॉट गिविंग इट. क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए. Electromagnetic radiation with energy flux of 10 watt per centimeter square falls on a reflecting surface at normal incidence. The surface area is 20 meter per second. What is the average force exerted on the surface during a 30-minute time span? मैंने कल की क्लास में भी एक बार इसका प्रॉब्लम फॉर्मूला लिखवाया था. बेसिकली when it is been reflecting from any surface, when light is being incident on this one, जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है और उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F is equals to 2IA divided by C. Isn't it? रिफ्लेक्शन के लिए अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो I into A divided by your C. Done. So that will be equal to 2. इंटेंसिटी कितना दे रखा है बेटा? इंटेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी? इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर बाय एरिया. पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट. यूनिट एरिया ऑफ दिस वन इज नथिंग बट सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी इंटेंसिटी इज गिवन एज दिस वन एनर्जी फ्लक्स. एनर्जी फ्लक्स इज नथिंग बट इंटेंसिटी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 10 into area. Area is given how much for me beta? 20 centimeter square. So it is 20 divided by your 3 into 10 to the power of your 8. Just take care of your calculation, we'll get the answer for that one. यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बेटा. ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया ज्यादा. यहाँ पर जब 10 watt per centimeter square लिखोगे और ये 20 centimeter square लिखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर will get cancelled. So we'll be getting this answer right now. कितना आ रहा है देखिए. Two into 10 into 20 divided by 3 into 10 to the power of 8. वेरी गुड क्वेश्चन पेपर बेटा. ये पेपर को तो आप लोग प्लीज पर्सनली 2-3 बार करिए. बहुत सारे फॉर्मुलेस रिवीजन हो रहे हैं, अच्छे फॉर्मुलेस रिवीजन हो रहे हैं और आराम से करने वाला पेपर भी है. क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के फिर एक बार अपने तरफ से ट्राई करिए. बेसिकली इतना आ रहा. ओके 1.33 into 10 to the power of -6 न्यूटन. बहुत कम लोग आंसर्स दे रहे हैं बेटा. आप सभी लोग इन्वॉल्व होना है.
ऐसा नहीं है कि पहली टाइम पढ़ रहे हो आप लोग। हाँ पेपर मैं भेज दूंगा बेटा, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, आई विल सेंड इट टू द मध्या मैडम, आप मैडम को एक बार पूछ लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 36। Two solid spheres are made up of copper. The radius of this second sphere is 3 times that of the first. The quantity of the heat required to raise the temperature of each sphere by 2 Kelvin are in the ratio. क्या पूछ रहा है वहां पर? हीट के पास quantities of the heat, the quantities of heat required to raise the temperature. And the quantity of the heat required to raise the temperature मतलब क्या हो जाएगा बेटा? M into delta T का H is equals to R Q is equals to MS into delta T. दोनों का same material, specific heat is same. So H is equals to M into delta T. So H1 by H2 is equals to M1 into delta T1 divided by M2 into delta T2. तो मास नहीं दिया, मास इज अ स्फेरिकल बॉडी है, तो मास में क्या लिख रहा हूं मैं? 4/3 pi into your R. So we'll be getting the answer in terms of R1 by R2 whole cube into delta T1 by delta T. So simplify कर लीजिए, that will give me the answer. Question number 37, also good question बेटा. The average thermal energy for a diatomic gas molecule is how much? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E is equals to F/2 Boltzmann's constant into your T. So number of degrees of freedom for diatomic कितने होते हैं बेटा? 5/2 times of your Boltzmann's constant into T. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 38 ऐसे अगर आप लोग कर चुके हैं तो कर लीजिए। This is your center of mass. क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करिए बेटा एक लोग, सभी लोग। In SHM, the displacement from the mean position is maximum. Velocity is minimum in magnitude, acceleration is maximum in magnitude, acceleration is minimum in magnitude, both 1 and 2. Direct formula है, velocity of an SHM is V is equals to your omega under root of your, V is equals to omega under root of your A square minus of your X square. A square minus of your X square. Amplitude square minus of your X square. उसने क्या बोला? X is equals to ये बोला है मैक्सिमम। अगर X की वैल्यू ये हो गई तो वेलोसिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A is equals to omega square into X, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं बेसिकली, isn't it? When X is equals to A, omega square into A will become maxima. Direct question. So acceleration is minimum in magnitude. In the part, acceleration is maximum in magnitude. Both 1 and 2. Both 1 and 2 आ जाए। Done. Very good. What is the Brewster's angle for the A to glass transition? Very good question. Again, formula based question है. How many of you have been remember the Brewster's angle का formula? जल्दी से आदत आइए। Brewster's angle का formula. Brewster's formula. Mu is equals to tan theta. Polarizing angle में आता है। Done. आया? Reversing angle tan theta पूछ रहा है, म्यू वैल्यू दे रखा है 1.3। tan theta is equals to 1 by mu. That is equals to 1 by mu की वैल्यू कितनी है? 1.43. It is your tan theta. So theta is equals to 1 by 4.3 कितना आ रहा है देखिए बेटा। Approximately 0.6 आ जाएगा। आ गया? फोर्टी फाइव नहीं होता बेटा। tan 0 कितना है बेटा? 0। tan 30 1 by √3
tan 45 1, tan 60 root 3, or tan 90 undefined. Tell me what will be the answer for this. Nearby. What is the Brewster's angle for air to glass transition? Refractive index of the glass is given as 1.43. Tan theta is equals to over tan theta is equals 1 by mu क्या आएगा? Sorry, ये मैंने गलत लिख दिया. Tan theta ही होना ना directly theta की value होना अपने. यानी theta value will be equal to mu की value कितनी है बेटा? 1.43 है ना? That is your tan theta. 1.43 मतलब 1 से ज्यादा 45 क्रॉस कर जाएगा. रूट 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 3 वैल्यू इज 1.732, यानी 45 और 60 के बीच में होगा. 45 और 60 के बीच में होगा. 30 नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा. ओनली ऑप्शन आई कैन चेक इट आउट राइट नाउ 55 डिग्रीज. यस 55, ठीक है ना? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा ना बेटा. म्यू की वैल्यू 1.43 दे रखा है और tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, यानी 45 60 के बीच में होगा. 1 से ज्यादा और √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73, यानी 1.73 से कम. सो द आंसर विल बी इन बिटवीन 45 एंड 60. तो स्मार्टली निकालना है अपने को 55 डिग्रीज. ओके चलिए. 42 डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या बेटा? ग्रेडियंट मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ इज नोन एज ग्रेडियंट. P by L. Pressure is equal to force by area into length. Force का डायमेंशन ml T power minus 2 area L square into L. तो ml T power minus m L power minus 2 T power minus 2. सेकंड ऑप्शन डन. कलर कोड का क्वेश्चन करिए बड़े जल्दी से, बताइए कोई कर सकता है इसको? The color code of the carbon resistor is given below. The value of the resistance and the tolerance are also given for me. The value of the resistance and tolerance respectively are equal to how much? Blue, red, green and silver. BB Roy of Great Britain has a very good vibe. जो formula याद रखें आप लोग. First band represents the first digit, second band represents the second digit, and third band will represent the zeros after the second digit, and fourth band will always represent the tolerance. Isn't it? First one is blue. Blue के लिए कितना होता है बेटा? 6. Isn't it? B.B. Roy of Great Britain, and this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6 of Great Britain. So this is orange है, 0 से start कर रहे हैं. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऑक्सीजन, देन उसके बाद ब्लू. ब्लू के लिए 6 आ जाएगा. Isn't it? So this will be 6. उसके बाद क्या? रेड. रेड के लिए कितना है मेरे पास? 2. So T digits हो गया 62. 62 मतलब थर्ड वन, सेकंड वन नहीं होगा, फोर्थ वन नहीं होगा, 193 के बीच में ही होगा. थर्ड वन will represent the multiplier. That is nothing but green. ग्रीन के लिए multiplier will be equal to how much बेटा? 10 power. ये कितना हो गया? 10 power 0. 10 power 1, 10 power 2, 10 power 3, 10 power 4. ग्रीन के लिए 10 power 5. This is 10 power 5. Plus or minus. सिल्वर के लिए टॉलरेंस तो आपको मालूम है राइट नाउ फॉर मी 10%. That's it. यानी कितना बन जाएगा? 62 into 10 to the power of 5 ohms. Plus or minus 10%. 62 into 10 to the power of 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ गया. चलिए वेरी गुड. 44 आप लोग ट्राई कर लीजिए. 45 आई होप यू कैन डू. टारगेट रेगुलरली आ रहा है. देखिए बेटा क्वेश्चन टाउ इज इक्वल्स टू r bar क्रॉस f bar. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग. नेक्स्ट वन. At a depth of 2 km in ocean, what force is acting on a window of area 25 centimeter into 20 centimeter of a submarine at its depth, the interior of which has been kept at a sea level atmospheric pressure? The density of the air is given as 1030. Direct force है बेटा. Force will be equal to how much? Force is equals to pressure into area.
When it is at a certain depth, pressure will be calculated with the formula P is equals to atmospheric pressure plus H rho into G. ये याद होना चाहिए आप लोग, isn't it? So now we can directly substitute the relation. So excess pressure which has been exerting on the window will be equal to how much beta? P minus of P naught, that is equals to H rho G. And a delta P will be equal to H rho into G. And a force will be equal to H rho G into your area. Height दे रखा है, density दे रखा है, G value मालूम है, area मालूम है, डाल दो, simplify कर लो, आ जाएगा आंसर. Done. 47 आप लोग कर लीजिए. 48 सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, कर सकते हो क्या, देख लीजिए. Question number 48. Suppose a pure silicon crystal has 5 into 10 power 28 atoms per meter cube. It is doped with 1 pp concentration of pentavalent arsenic. Calculate the number of holes. मैंने क्लास में भी बहुत बार करवाया था यहाँ पर. Number of electrons will be equal to number of electron density. Dope concentration का formula क्या हो जाएगा बेटा? What is the dope concentration formula? Number of electrons into number of your holes will be equal to your intrinsic semiconductor का whole square. Any number of holes will be equal to your Ni square divided by N into E. Done. Dopant कितना है बेटा? Crystal कितना है मेरे पास? 5 into 10 to the power of 28. मतलब dopant concentration will become how much for me बेटा? Number of electrons की dopant concentration will be equal to 5 into 10 to the power of 28 atom doped with 1 ppm. And this will be divided by your 1 ppm is 10 to the power of 6. Done. इसको simplify कर लीजिए, you'll get the value of that one. Number of electron density is given for me how much for me intrinsically 2.5, and this one is 2.5 into 10 to the power of 16 का whole square divided by हो गया 5 into 10 to the power of 28 divided by 10 to the power of 6. That gives me the answer. What do you mean by ppm beta? Parts per million. Done. Check that. I don't know. You just check with the options with that. Next one. An object is placed 10 centimeter in front of your concave mirror. This is your concave mirror, which has been silvered on the outer side. Radius of curvature भी दे रखा है. R is equals to 10 centimeter. Magnification produced by the image. Magnification for the mirrors will be M is equals to minus of V by U. An object distance has been kept for me. This is your O. Object distance is given for me equal to 10 centimeters. So radius of curvature is 2 times of focal length. So focal length will be equal to R by 2. That is nothing but 10 by 2. That will be equal to 5. Concave mirror है तो radius of curvature will be minus 5. Use the mirror formula. 1 by V plus 1 by U is equals to 1 by F. 1 by V plus 1 by U is equals to 1 by F. This means मेरे पास object distance है. Object distance is also negative beta. U is equals to minus 10. Focal length is also minus 5. So we'll get the value of image. Once I get the value of image, then you substitute in the magnification. आपको आंसर आ जाएगा this. Done. Question number 50 kinematics का एक बार आप कर लीजिए बस. Okay. I'm sending this paper. एक बार फिर से आप लोग अपनी तरफ से एक बार करने की कोशिश कर लीजिए. ठीक है? चलो. Take care बेटा. Bye. Late हो गया मेरे पास already.